Good morning, everyone. Good morning. Good morning. कोई भी डाउट से पूछ लो. Good morning, Usman. Good morning, Varun. Sir, 430 pips running yesterday straight. Keep it up. हाँ, एमएनपी और एलटीडी दोनों में आया. So whenever you look for an execution perspective, what do you notice at this current stage? Should you be looking for a short trade? Not yet, right? But आईडी के लिए क्या short trade देख सकते हो? Yes. Why? Let's look into the perspective of that analysis. At this current stage, what do you notice at this point? Each and every notion is in the movement towards the long, and the zone of action in the current state from New York PM session till now, the market is in iceberg zone, right? When the market is in iceberg zone, the liquidity is being collated in position of allocation to the retailers. मतलब यहाँ पे हर एक point of action में retailers को बिठाएंगे and the liquidities will be created. Once that liquidity is created, what do you notice? We have a zone of action where the intax is being identified, so the market will push down to the moment of action till this range, and then the continuity in the movement will occur again. So, what is the major thing that you have to look for? One single shot movement plan which needs to be allotted in the buying side. जैसे ही buying side का allocation point develop होती है, उसी point of action के साथ cover up till the liquidity grab point. Liquidity grab point cover होते ही market will create a setup and continue the movement again. So हरी में at the top end point मत बैठना. ID trades could be looked at the current stage, not the controlling swing allocations. Right? Exactly, minimality M2 का target hit हो चुका है. From here, whatever the conversion you will be looking will be on the break and sustainability on top of 3691. Okay? किसी को भी कोई भी doubts है, please do ask. Stable allocations is very much important to identify the structures which is being indecisively moving in the substantial direction of the bullish moment, because the conclusion of US dollar and the China gold reserves is in the clash. So market could not take a dip till the time there is a tariff agreement signed by these two governments. ठीक है?
So can add on from intact now. Good morning, Anurag, for ID trade. Okay. Yes, Anurag. BTC 1000 points running. Hold it till the M2 200%. 200% तक hold करो. Okay. एक रिट्रेसमेंट कहाँ से नेक्स्ट मिलेगा? Supply, high wick range. So one, continued movement two. Okay. So 150% से एक wick range से एक छोटा सा retracement and then continuity in the movement. Good morning, Sandeep. I tried to watch old videos, interesting subject, but confused. Please guide me where and how to start with. Is there any private group or course you provide? We have only groups for MNPs and LTDs, that is one on one, and we have a small allocation point. Whatever doubts you're having, you can get it clarified in a Telegram group or in WhatsApp. And if you want to watch it in YouTube and only learn, then you can start with mathematical section tab. Post completion of mathematical section tab, then supply and demand tab. Once completion of supply and demand, then volume and liquidity due. This is the formation that you will be looking for. Good morning, Ritesh. Okay. Okay, so MTS 800 points. गोल्ड का एस टू इंटैक्ट का फर्स्ट सिस्टम ट्रेलिंग यहाँ पे होगा 55 पे एंड MTSL पॉइंट यहाँ पे होगा एट 76. सर आपने एक पोल करे थे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप के लिए. कैन वी एक्सपेक्ट एनी टेलीग्राम ग्रुप फॉर डिस्कशन? नो, वी कांट एक्सपेक्ट at the current stage. No.
No worries, Sandeep. Sandeep Dikshit. Once the liquidity grab is taken, will allocate an add-on. Yes, once the liquidity grab is taken, with that a formation of a setup of S1, sorry, S to B1 or else a three wing, we will allocate. Same scenario as yesterday. Can you explain yesterday's gold chart starting from UTC 7:30 a.m. to this large move? This is not a large move. ये तो सिर्फ 400 पिप का movement है. As it's surpassing allocation levels of 200% in 5 minutes and hour also. Anurag, we don't trade in 5 minutes. So I'm confused here how to mark. We don't execute trades in 5 minutes. We look for an execution of trade in only 15 minutes. Should I first go through TTS concept book or directly contact you? If you want discount on the book as well, you can contact TTS. They'll give you the discount, right? So in perspective of MNP and LTD, you will be getting the book with the course of 1 hour. Sorry, not 5, 15 minutes. So whenever you get into the plan of action of 15 minutes in allocation, what do you notice over here at this current state? Market took a rejection in the live perspective, which Usma had asked, why not we are taking this candle as a demand, right? So we wanted a right point of action. So Usma agar tu bhi hai, so what do you notice over here? This was the demand, what we marked 200%. Once 100% rejection milte hi, we took this allocation from this point of action. What did you see? Exact rejection from demand 200%, right? So with this point of action, what do you see? The market created a structure and gave a movement. With this plan of action, what do you notice at this point? There is no as such execution setup which were created. It was a direct hunt movement where everyone sat into the trade in FOMO post closure of this candle, right? So market tend to come down and we gave a trade in the group as well, which was towards and long with an intact of S2. तो उसी के साथ यहाँ से long में execution में बैठे थे. With this long execution, what is the first setup of allocation that you will be looking for? First come first serve. First come first serve में कौन सा ये allocate होती है? One second. Right? So 200% से जैसे rejection लिया, first come first serve में this is the supply what we are having. So we allotted the supply, 100% rejection. Once the 100% rejection is taken, market moved from the same substantial movement, continued in the direction, right? So here break and continue of 100. What do we notice? We notice a 200% closure of supply. So once the 200% closure of supply is created and market tend to move in a direction, what is the next step of action plan that you do? You take the surplus movement. Where is the surplus movement? 150% or 200% of the supply is taken under the consideration of surplus. So this is the supply what you'll be marking.
and allocating with the newest structure, with the body. What do you notice? Market tend to take the rejection from the same point of the zone. Got it? So this is the 15 minutes allocation. Why R level is over here? Because it was 1 hour allocation point which was taken under the consideration post 15 minutes targets that were in position of to the previous. The previous allocation point of structure was taken in consideration of this supply because rest all of the supplies were completed in the zone of action. So once the zone of action is completed, what do you notice? This is the first movement action plan which will be taken under the movement to allocate the structure of the supply, which will be mapped in the consideration of the zone of action from the last retracement point. Once the conversion point is taken under the place, break and continue of 1 hour structure, 200% supply target. Okay. ये थोड़ा विक तक नहीं लिया है तो थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है. So if you notice, it's exactly from the same zone. Okay, Anurag. Hope everything is cleared. Any other doubts? Stream will be there for only 15 minutes more. Sir, exactly market is taking rejection from the same spot. Not yet. Wait, ma'am. आने दो. Stabilize structure को redevelop होने दो. उसके साथ ही continuity in the movement. Don't hurry. We'll not be doing it today, Anurag. Because today we are closing the stream bit sooner. So ये जोन ऑफ एक्शन से सेटअप डेवलप होता है तो यहाँ से देखेंगे उससे पहले नहीं. ठीक है. स्मिता मैम, अरुंधति मैम, अगस्त्या, विशाल, हेमंत, हर्षिनी, एवरीवन. गुड मॉर्निंग सर. ये 1 आवर का सप्लाई लास्ट रिट्रेसमेंट से मार्क क्यों किया, लो से क्यों नहीं? Because in the action plan of execution, what do you notice at this point? Right? The first execution point was taken under the consideration of this and this. इस दोनों का भी टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. That's the reason we took the third serving, not the first and second. Okay, Praveen. तो गोल्ड में कैरी फॉरवर्ड हाँ कर सकते हो मैम. I don't have any issues. You can carry forward the trade. So एक ही चीज ध्यान में रखना, take home should be more than 350 pips.
नहीं नहीं, वेट करो अंबिका। लॉन्ग पोस्ट कंप्लीशन ऑफ लिक्विडिटी ग्रैब, क्लियर कट बोला है ना। सो जैसे लिक्विडिटी ग्रैब ऑफ एक्शन प्लान जनरेट होगा, इस पॉइंट ऑफ एक्शन पे ऐड ऑन देखेंगे फिर से, नॉट प्रायर टू दैट। उससे पहले आईडी का ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन देखना है तो देख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। कुछ नया बोलो यार, रोज सेम चीज क्या बोलते रहते हो। गुड मॉर्निंग फैजा, यू आर लेट टुडे। No, 10 o'clock was your session, not 11. अगस्त सिस्टम ट्रेलिंग कहाँ पे है यार तेरा? प्लीज द सिस्टम ट्रेलिंग प्लीज।
Follow the process, man. कुछ भी बोलते हो। आपने वो जो S2 मार्क किया वहां से ट्रेड पकड़ा। प्लीज शो मी द प्रूफ। क्या वर्षा फिर से ये लोगों को क्यों एक्सेस दिया यार तुमने? गिव देम द प्रूफ। ओके। वर्षा स्क्रीनशॉट्स दे दो। सब दे दो। प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे को। कौन है सर वो? मेरे को क्या पता है? आई डोंट हैव प्रॉब्लम्स हो गया। देख ले भाई। 1 2 3। S2 इंटैक्ट था। एग्जीक्यूशन पर्सपेक्टिव 1 जो कि 60 पिप्स चल रहा है। एमबी 80 पिप्स चल रहा है। एंड 80 पिप्स के साथ अगर नोटिस कर रहे हो 100 पिप्स, 180 pips, partial exit at 200 pips, partial exit at 340 pips, exit the partial 10% at 380 pips. Next target is still aim to 200%, right? एंड हमने जो एड ऑन क्वांटिटीज किए थे सब एग्जिट करके जो नीचे से चल रहा है वो ट्रेड S2 इंटैक्ट का वो अभी तक चल रही है। ओके। एंड बोला था कि नहीं बोला था वो भी जवाब दे देंगे। वर्षा वो एड ऑन टाइमिंग भी दे दे। एंड ये मैसेज भी देख लो। 1457 add on from the intact level, close the 50% of the live trade। live trade हम short के तरफ थे, उसके वजह से we close that trade of action। and Indian timing के हिसाब से 257, right? I'll showcase you at 257 what has happened, where was the market।
Kolkata. Where was 257? This is our 257 candle. Okay. So with that, this was the intact level which the trade was executed. With that proportionate, the trade was executed in the direction with the add-ons. Happy? Pasha, axis हटाओ यार सब. Sir, liquidity calibration में 15 minutes, 15 minutes, 15 September, okay, sorry. Liquidity calibration में 15 September को 7 a.m. to 7:30 a.m. तक का जोन ही सिर्फ एम शेप पैटर्न में कंसीडर होगा या 7 a.m. से पहले वाला जोन भी कंसीडर होगा. ये लाइव पे किए थे हमने. ये वाला, this was the liquidity calibration point which was informed to you in the live saying that the market will move in the direction of liquidity calibration point. एंड यहाँ पे एम पैटर्न कहाँ पे बिल्ड हुआ है? एम पैटर्न है ही नहीं. वो रिटेलर्स के लिए होगा एम पैटर्न. लिक्विडिटी कैलिब्रेशन के साथ ही तो था ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन. सर 300 पॉइंट्स रनिंग इन बीटीसी फ्रॉम योर डिमांड अलोकेशन पॉइंट. ओके अंबिका. एशियन सेशन का एसएल्स फॉलो करके चलना. I can't see the charts which sir is reading. Arvind, that is of one-on-one chats of LTD and MNP.
टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होने के लिए क्या करना होगा? वी डोंट हैव टेलीग्राम ग्रुप, रमेश जी। जनरल पब्लिक मेंबर्स का ग्रुप नहीं है। गुड मॉर्निंग जैद जी, कैसे हो? ग्रेट। आपका लैपटॉप का इश्यूज सॉर्ट हो गया? गुड मॉर्निंग बीके। सर, आपसे बात करने के लिए कितना बार रिक्वेस्ट किया लेकिन नहीं हो पा रही है। सॉरी बीके।
आज सेशन एंड होने के बाद हो सकती है क्या? नहीं यार, मुश्किल है। सर डेस्कटॉप लैपटॉप दोनों भी बंद हो गया, सो नो ट्रेडिंग फॉर 15 days, अटेंडिंग लाइव सेशन ऑन मोबाइल टू कीप माई सेल्फ अप टू डेट। ओके जैद जी, अगर ट्रेड नहीं कर रहे हो ना, सो जब भी फ्री टाइम मिलता है ना, तो गो थ्रू द सप्लाई एंड डिमांड सेशंस एंड गो थ्रू द हाई कैलिब्रेशन वीडियो एंड देन गो थ्रू द लिक्विडिटी ग्रैब एंड इंटैक्ट लेवल्स का वीडियो मल्टीपल टाइम्स, एमएनपी का। ठीक है। सो फॉर्मेशन सीखने में इजी हो जाएगी आप। बीके आपको कॉल में भी समझा दिया था, तो एक ही क्वेश्चन को 1000 बार रिपीट करना इज नॉट गुड, राइट? होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सर सब हार्ड डिस्क में सब लॉक है। ओके ठीक। कंफ्यूज हो रहा है, राइट? तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ। यूट्यूब में जाओ, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वीडियोस देखो, सप्लाई एंड डिमांड वीडियोस देखो, उसके साथ लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रक्चर को देखो, एंड जो आप डिस्काउंट पूछ रहे हो वो डिस्काउंट नहीं हो पाएगा बीके। ठीक है। होप आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस। सर मैंने S1 B1, रमेश जी पूरा पूरा समझा दीजिए एक बार। सर मैं S1 B1 was शुरू कहाँ से करना है, डायरेक्शन कहाँ से फाइंड करना है, आज के मार्केट की वही नहीं पता चलता है। रमेश जी पूरा एक बार लिख दीजिए। सर S1 B1 वाला वीडियो देखा था बट लाइव चार्ट पर में बंद है तो समझ नहीं आता। नहीं, S1 B1 सिर्फ Q1 एंड Q2 में काम करता है। ठीक है रमेश जी, करेंट स्टेज में सिर्फ S2 सेटअप्स फॉलो करो। जब Q1 आएगा, Q1 में हम बात करेंगे S1 सेटअप्स की, जो कि इंड्यूसमेंट्स के साथ फॉलो होती है। राइट। सो जैसे ही वो फॉर्मेशन डेवलप होती है, वी गेट एन अपडेट 1 week prior, तो उस टाइम से वी विल work on live charts on how to work on S1 setups.
अभी के लिए एग्जीक्यूशन पर्सपेक्टिव में अगर रमेश देख रहे हो, you can look in perspective of three wing, S2B1 and threshold for crypto. Okay. सर डिस्काउंट की बात नहीं है, टीटीएस बुक का बारे में जानने की। आपके कोर्स वीडियोस और टीटीएस बुक में से सफिशिएंट होगा एज आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। सर आपके पास जो 2 years ऑफ एक्सपीरियंस है ना, वो 2 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मल्टीपल स्ट्रक्चर पे है, राइट? आप उसके कॉम्बिनेशन ही अलग है, राइट? आपको बुक के बारे में जानना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू जाके देख सकते हो। एंड आपको सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करके चलनी है तभी खरीदना। अगर उसके बाद जाके नया स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, नया कुछ आगे ये करना है, देन डोंट बाय इट। Always work on one formation and master that one formation to succeed in life. Let it be business, let it be trading, let it be office work. Master one thing. अगर सब में परफेक्ट होना चाहते हो, then you won't be good at anything. ठीक है? ब्रूसली ने कहा है, I'm not scared of a person who knows 1,000 techniques, but I'm scared of that one person who has practiced one technique for 1,000 times. That's the reality. So focus, whichever strategies you follow, whichever setups you follow, it doesn't matter for me, but master that setup. बिल्कुल नहीं सर। अंबिका ऑन द ब्रेक एंड कंटिन्यू डायरेक्ट टारगेट 200% का होल्ड अप करना M2 का, ठीक है? ऑन द ब्रेक।
डेफिनेटली सर, आपका ही तरीका मेरे लिए बेस्ट लगा है। सही में आपसे सीखना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज बताओ क्या बुक सफिशिएंट है आपकी सीख के लिए। BK, same question you have repeated 7 times today only, right? I'm saying you it works as a manual if you know how to work on the chart. अगर आपको चार्ट के ऊपर काम करना आता है तो बुक विल वर्क एज अ मैनुअल। ओके, एब्सोल्युटली सर, दिस इज द बेस्ट सेटअप। मैं चार धाम घूम के सेटल से पर सेटल हुआ। एब्सोल्युटली सर, दिस इज द बेस्ट सेटअप। मैं चार धाम घूम के सेटल से पर सेटल हुआ। ओके जी, समझ में नहीं आया, बट आई अंडरस्टूड योर version of saying it. So good. वो चार धाम मेरे को बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री उसके बारे में याद दिला दी। Where to learn the basics of this? Ranju, we have tabs opened. Okay, होम सेक्शन में टैब्स है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉलो करो, उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड, उसके बाद लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम, डीओ का एक वीडियो सेक्शन है, वो वीडियोस देख लो। उसके बाद ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन में लाइव में चलता रहता है। द सेम एग्जीक्यूशन विल बी टेकन अंडर द प्रिविलेंट एक्सेस टू एग्जीक्यूट द ट्रेड्स। ठीक है। तो व्हाट आर रिजेक्शंस? एंड जो भी डाउट्स आपको आता है, यू कैन गेट इट क्लैरिफाइड इन द लाइव स्ट्रीमिंग। सर, स्ट्रैटेजीज के भी चार दाम हैं, पर किधर भी मोक्ष नहीं मिला। इस स्ट्रैटेजी में मोक्ष है। ओह, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच दैट। After purchasing TTS book, I'll get my doubts cleared in Sunday Zoom sessions, right? For which I have to pay 4K per month. क्या लिखते रहते हैं यार भाई? अगर डाउट्स आ रहा है तो लाइव में पूछ लो। लाइव तो रोज चलता है, लाइव में क्लियर कर लो। गेटिंग द पॉइंट?
some videos are for members only. उसमें ही ऊपर ही है देखो सब्सक्रिप्शन, ज्वाइन करके बटन होगा, थ्रू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन इट. 300 पॉइंट्स चाहिए M2 कंप्लीट करने के लिए. वर्षा इसको ब्लॉक करो यार, कौन है ये? Please tell me about 4K per month wala subscription. What will we learn in that Zoom sessions? वो मेंबर है, यूट्यूब से बात करके उसका पैसा वापस करो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है. बीके उसमें ही लिखा है यार, क्या क्या मिलेगा आपको करके. 3 विंग सेटअप परफेक्टली कैसे बोलते हैं प्लीज गाइड, आई हैव लिटिल बिट कंफ्यूजन. तो रमेश, दो टाइप ऑफ टू विंग, सॉरी, देर आर टू टाइप्स ऑफ 3 विंग सेटअप. आज के लिए we'll talk about one, right? What you can look for whenever you see a high wick range, 1, 2, 3, right? तीनों कैंडल में विक होना चाहिए, हाई विक. जैसे ही हाई विक रेंज डेवलप होता है, then you look for an execution on a rejection candle of the fourth and execute the trade on the conversion to the green. Example wise मैं दिखाना चाहूँ. So if you notice over here, what do you see? Wick 1, Wick 2, Wick 3, right? This is a 3 wick range. So this is called as 3 wing. Execution will be taken place in the fourth candle, right? So you have to wait in the persona of creation, right? आज के लिए वन डायरेक्शन बात किए, कल में और एक डायरेक्शन भी ऐड करते हैं, ठीक है? So this is in crypto. Crypto में majorly you look for a 3 wing post completion of a Trishul formation, which is external liquidity in 1 hour time frame. उसके बाद ही 15 मिनट में देखना होता है. गोल्ड के हिसाब से देखोगे तो आई शोकेस यू हाउ डज अ 3 wing लुक. Okay, so if you notice over here, it should be always in a high wick range. Okay, so what do you see? Wick 1, Wick 2, Wick 3, correct? So when the 3 wick formation is completed and closed always higher than the previous candle, then you can look for a fourth candle execution. Always look for an execution in perspective of a closure. Same way, अगर डिमांड कैंडल क्लोजर देखने को बोलते हो, what do you see? Wick 1, Wick 2, Wick 3, you could have executed the trade on the fourth candle, right? So with this kind of proportionate, you can always be in the right direction till the target. So with this, there is always one more setup which you can follow. That is a second type of 3 wing. So वो भी complete कर ही देता हूँ. Okay. So एक हो चुका है, 5 मिनट और लगेंगे.
राइट? व्हाट डू यू नोटिस? जब भी एक मूवमेंट एक्शन प्लान होती है ना, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, दिस इज अ मूवमेंट, बुलिश मूवमेंट है, मार्केट में आपको पहले ही इंडिकेशन मिल जाता है कि मार्केट में रिवर्स होने वाला है at the nearest target. So what do you see? This is a supply 150% target, right? उससे पहले ही आपको क्या मिला यहाँ पे? Wick 1, Wick 2, Wick 3, right? So this is a three wing formation in the second setup. इस formation जब बनता है, one red candle waiting, एक red candle का wait करो, second red candle में trade of execution देखो, right? So always the market gives you an indication before the movement. If you notice, wick 1, wick 2, wick 3. One red candle confirmation, execution with the second. So this is the second setup of three wing. हमेशा याद रखना, जब जब थ्री विंग क्रिएट होता है, मार्केट गिव्स यू एन इंडिकेशन ऑफ अ रिवर्सल इफ इट्स इन द डायरेक्शनल मूवमेंट. जब एक डायरेक्शन कंप्लीट होती है, उसी पॉइंट ऑफ एक्शन के साथ थ्री विंग डेवलप होता है. अगर मार्केट एक डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना हो, सो जो डायरेक्शन में मार्केट मूवमेंट में रहता है, उस डायरेक्शन में ही आपको इंडिकेशन दे दिया जाता है, राइट? वी लुक फॉर वन मोर सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू, राइट? So what do you notice? Why this movement took a play? 1, 2, 3, three wing create हुआ, उधर से 150 पिप का movement as a retracement play out हुआ था, right? With the same formation, यहाँ पे trade of execution short के लिए नहीं था. Wick 1, Wick 2, Wick 3, you could have executed the trade over here in this position at the fourth candle and hold it up till minimally 200%. So always look for a directional movement to execute the trade of action. Example और एक ले लो, 1, 2, 3, 3 wick, market gave a movement towards the short, 1, 2, 3, fourth candle execution, market gave a movement towards the short, right? In this position, if you notice, each and every time of action, market tends to give you an example and set you in a right direction whenever there is a three wing. 1, 2, 3, fourth candle execution till demand 100% completion, right? 1, 2, 3, fourth candle execution till demand 1, TP1, TP2. So always look for an execution in perspective of through the previous. Okay, Ramesh? जिन जिन को भी थ्री विंग में डाउट था, तो they can rewatch by rewinding it. You will be able to figure it out. Refresher, wonderful. Thank you, Zaidji. All the new members, it doesn't matter which strategy you're following or concept you're following. Always remember, do 6 months of forward testing, do 6 months of backward testing, do 1 or 2 months of live analysis, come with a smaller capital, execute the trades, compound the structure. With compounding, look for a proper risk to reward followment structures. With that, protect your capital and be in the directions of the mathematical calculations. Don't go against the market. If you go against the market, it will tend to hunt your capital out. So it's your hard earned money. Protect it, learn, execute, keep learning, and keep growing. This is Nitesh signing off.
मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Sorry guys, I'm back. Can anyone translate this message to me? ये जो मैसेज आया ना, कोई ट्रांसलेट कर सकते हो क्या हिंदी में? नहीं, जवाब तो दूंगा उसको। डिलीट कर दिया मैसेज उसमें। इट वाज समथिंग लाइक कोर्स सेलिंग स्टफ। भाई आप जो भी हो ना, मेरे को he is basically saying that if you had so many problems answering question, you shouldn't be selling the course and the book. At first place, Mr. BK, I am not selling course or the book. If you really want to understand that the people are learning from the live streaming as well, okay, and in that pursuant 2 to 3 lakhs, right? मैं पहले ही बोल चुका हूँ यार, प्रीवियस स्ट्रीम में जाके देख लो। नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड माय कोर्सेस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इट्स नॉट माय प्रॉब्लम, राइट? एंड आई डोंट वांट योर मनी यार। मैं ऑलरेडी टीम को बोल दिया हूँ, यूट्यूब का भी आपने जो मेंबरशिप लिया है वो पैसा भी आपको रिफंड हो जाएगी, ठीक है? एंड अगर सीखना है ना, लोग सीख रहे हैं, लाइव पे ही सीख रहे हैं लोग, लाइव पे ही ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन देख रहे हैं।
भाई सुन ले मेरी बात। आप कितना भी मस्का लगा लो, आप जो डिस्काउंट पूछ रहे हो वो डिस्काउंट मैं देने वाला नहीं हूँ। राइट? आप एक बार एक एक बात करके, एंड इफ यू कॉल मी ऑन ए डेली बेसिस, नॉट मी एक्चुअली, माई टीम, मल्टीपल टाइम्स, दे विल डेफिनेटली ब्लैक लिस्ट यू। डाउट है लिख के रखो, पीपल आर आस्किंग इन स्ट्रीमिंग, नो, आई डोंट हैव ए प्रॉब्लम। राइट? एंड डेफिनेटली अगर यूट्यूब में लाइव नहीं आ रहा हो एंड पीपल आर मैसेजिंग इन टेलीग्राम, डेफिनेटली आई रिप्लाई देयर, और टीम will reply there. But on a daily basis, if you call me 10 to 15 times and delete the call log, you think we don't have? We have a service for that as well, man. And आपने जो languages use किया है ना, वो languages भी recorded है हमारे पास। उसके बाद भी मैं पेशेंसली बात कर रहा हूँ, इसका मतलब वो नहीं है कि मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ। राइट? सो आई एम रेस्पेक्टिंग यू, आई एम रेस्पॉन्डिंग टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ यू। मतलब सीखो। I know you can't afford it. Why are you wasting my time messaging and wasting my team's time to give a response to each and everything? Okay. Sir, my trading skills is improved by 0 to 90% from YouTube recorded lectures and live sessions. Thank you so much coming live and solving that. No worries, Ramesh. Okay. So be Kehan, your money will also be responded and given it to you back in pursuant through YouTube itself. So we don't want your single rupee, and you don't have any rights to ask what I am teaching, and I'm not providing my MNP students videos to you at a lower cost, because that are one-on-one sessions. क्लियरली मैं अब बता दे रहा हूँ, दूसरों का MNP स्टूडेंट्स का वीडियोस मैं आपको देने वाला नहीं हूँ। आप किसको बताना है बताओ, एंड कॉन्सिक्वेंसेस मैं हैंडल कर लूंगा। आई नो द कॉन्सिक्वेंसेस, हाउ टू हैंडल इट, वेयर एंड व्हेन। राइट? Why is it one-on-one sessions? Why is it not group sessions? Because it's as per one person's mindset and psychology. We provide the customized trading sessions. And वो videos मैं आपको कम दाम में क्यों भेजूं? Sorry guys, sorry to spoil the mood. And जो भी BTC का ट्रेड में है ना, MTSL follow करके चलना, right? Another 150 points, the target will be hit. ठीक है? Take care guys. This is Nitesh signing off. मिलते हैं अगली वीडियो में. Bye bye.